Hi, welcome everyone. We're very happy to have you here. We're very excited that you've decided to spend your Thursday evening in this at this webinar, hearing some lovely people speak about education. So I'm going to start by welcoming our moderators and our speakers. This webinar is part of the course that we have launched on Coursera. It's called Reimagining Education for Equity. And the course is about education, sustainability, inclusion, and equity, amongst many other topics. But these are the broad themes in case you haven't looked at the course already on Coursera. And I'll introduce our two moderators for today. Professor Poonam Batra. She is Professor of Education, formerly with the University of Delhi. And she's also the lead instructor at the course that I was just mentioning, Reimagining Education for Equity. And we also have Amir with us, who's the Associate Dean at the School of Environment and Sustainability and also the School of Infrastructure. Amir is also responsible, or he was very integral for the research that has led to this course that I've been mentioning. And welcome again, Amir and Poonam. And I would request Poonam to introduce our guest speakers for this evening. Thank you. Thank you, Garima. Thank you so much. And thank you, Amir, for joining in. This session we thought would be a nice opportunity to have teachers speak to us, school teachers. Both Richa and Rajni are school teachers in the government school in Delhi. And they both teach different levels of education. Richa more or less focuses on classes 6 to 10, and Rajni's focuses at the primary classes. Rajni has also completed her doctorate in education in looking at language and issues of children's literature. Richa is pursuing her doctoral research also on children's literature, and I welcome both Richa and Rajni. They've got rich experience working in school, apart from the fact that they did the 4-year Bachelor of Elementary Education program that trained them for the elementary school. And they have been also keen sort of learners and knowers. Very rarely do school teachers get the opportunity or have the drive to somehow take leave or take off from school and do research. But here they are. And thanks very much, both Rajni and Richa, for joining us. We can sort of start the session with just a few sort of questions around what these teachers can possibly enlighten us with, because they are the real practitioners. Many of us in the university settings speak about education, theorize, and research, but the kind of experience that comes from being on the ground, I think brings far more richness to a more grounded discourse. And I think I'm looking forward to discussions that emerge from this conversation, and what, of course, will emerge from all of you as participants. We will have half an hour at the end of the conversation, so that we can also have questions from the audience. We've tried to look at issues of teaching, learning, and equity, since the MOOC is really a focus on reimagining education for equity. So we're going to look at some questions around school culture, around teachers themselves, their work conditions, their work challenges, and the kind of satisfactions they get out of that. Questions of curriculum, pedagogy, questions of equity with regard to all of this, and specifically the school arrangements, and of course, questions around teacher collectives and communities of practice.
Should I start with you, Richa? And I think we can be open about using both English and Hindi. We do understand that there will be people in the audience who will be more comfortable with English. I will try and see if we can summarize. Both Amir and me can pitch in to do that. But please feel free to speak in the language that you feel comfortable in. So I should start with Richa, perhaps. Richa, I really like you to sort of reflect and tell us what you think is possible within the school setting. Given your experience, and I think you also have a larger understanding of the school system. What are the kind of spaces that are available for supporting teachers professionally within the school and within the larger education system? And this could be extended to opportunities to study, to read, to research, to write, and so on. So go ahead. First of all, I would like to thank you all for giving me this platform. And I'm really honored to be here and be able to share my understandings with the larger community. So, like you asked me about these spaces which have been provided to the teachers for their growth, for their research. I'll begin by saying that I'm from a government setup. So we are directly following the policies which are designed or which are recommended by the government institutions. So, as we all know, the new education policy, along with the previous policies, they do have spaces for teachers where they recommend that teachers can be active researchers, they can enroll themselves for the same. However, I think the implementation part is very specific to the school unit and the education departments as such, and the people who are chairing particular positions. So, if I come down to how the implementation works, it can be different at different places, and it largely depends upon the ethos of that institution, larger ethos of that system. So I believe in if I come from my own experience, I did have some support, and that is how I can continue both my job as a teacher and I can also pursue PhD. For this, I'm very this is also a very good opportunity to tell you that there have been people throughout in bureaucracy also who like to who actually support you in your journey, but then there are roadblocks as well. It's not all smooth either. So, and similarly, in the case like you asked me for the systemic places for teacher growth, I would say that there are regular subject interventions in the form of in-service teaching programs and some workshops which are organized. However, these are not very focused, or these are not very detailed in the way I would have wanted them to. But there are opportunities. If done and program planned well, this can be utilized in a very wonderful and amazing manner. However, there are some things which can be improved, which are left, which can be worked upon. So now coming to the fact that I have also finished my MPhil along with my job. There are no systemic procedures in place which help you or aid you in your progression as a researcher, or which help you to proceed into the higher education. You're not stopped, but you are not actually given that kind of scaffolding where you are motivated to go and pursue higher education. Your motivation has to be your own, or coming from other places apart from your profession. So this is how I have seen, and this is what has been uh, my journey. Sorry. So the system itself doesn't sort of encourage you or It provide does not. those kind. I mean, you have to have a drive. Yes, This is yes. an important point you raised. Rajni, do you think you could tell us what kind of possible spaces are either available or
created, let's say, by you as teachers to exercise your agency, to assert, the kind of professional support you may want, or what you can do as a professional practitioner within the curricular pedagogic spaces? Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity to speak in front of such a large audience. यस, अगर हम स्कूल के कल्चर में या स्कूल के स्पेस में हम ये देखें कि कैसे टीचर एजेंसी को हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि टीचर एजेंसी की जो समझ है उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम टीचर एजेंसी को एक, एक ऐसे एक्शन की तरह देख रहे हैं कि जो कुछ बदलना चाहते हैं और उसमें बस उन्हीं का अपना एक इंडिविजुअल रोल रहेगा, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल रहेगा इस पूरी बात को समझने के लिए गहराई से। हाँ, हम लोगों के पास एजेंसी एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक इन्वायरमेंट, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी और जो रिसोर्सेज हैं, उन सबका जो इंटरप्ले है इन सबके बीच का, वो मुझे लगता है कि एजेंसी को एक्सरसाइज करने में मदद करता है स्मूथली। पर जब हम स्कूल कल्चर की बात करते हैं और स्कूल में स्पेसेस की बात करते हैं, तो इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी और सहमति जताऊंगी कि हमारे स्कूल कल्चर में बहुत ज्यादा इस तरह से नजर नहीं आता कि आप कुछ अपने तरह से कर पाए। कम से कम ये उम्मीद तो नहीं है, ना ही ये अपेक्षा, ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती शायद कि आपको अपनी समझदारी से, अपनी कॉन्शियसनेस से या अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपनी स्टडी से अपनी क्लासरूम में कुछ करना है या अपने स्कूल में कुछ करना है। तो ये एक लिमिटेशन रहती है हमारी व्यवस्था की, पर ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं करते। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है आपकी टीचर एजुकेशन, कि आपका खुद का ओरिएंटेशन टीचिंग को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, टीचर्स को लेकर के, लर्नर्स को लेकर के किस तरह, और आप किस तरह से इंगेज करते हैं नई रिसर्चेस के साथ में, नई जो स्टडीज हो रही हैं, आप कितना पढ़ते लिखते हैं और जो आप सीख करके आए हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम इस समझदारी के साथ स्कूल्स में आते हैं, तो सिस्टम तो लिमिट कर ही रहा है, या स्कूल के जो सेटअप है, कल्चर है, उसमें शायद हर एजेंसी में ये लिमिटेशंस रहती होंगी एक इंडिविजुअल के सामने। पर मुझे लगता है स्कूल एक ऐसा स्पेस है जहाँ टीचर्स फिर भी इनको चैलेंज कर सकते हैं और अपनी क्लास में जो चाहें, जिस तरह से चाहें, उसके लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने कुछ साथियों का और अपना भी इसमें एक उदाहरण शेयर करना चाहूंगी। कई स्कूलों में हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से पक्के ग्राउंड, यानी बिल्कुल खेलने की जो जगहें हैं वो सिकुड़ती जा रही हैं बच्चों की। और ऐसे क्लासरूम के डिस्कशन जिसमें आप बच्चों के साथ कम से कम 1 घंटा किसी विषय पर बातचीत कर सकें, हर बच्चे की बात सुन सकें, उनके एक्सपीरियंसेस को सुन सकें। इस तरह के जो स्पेसेस हैं, इस तरह का जो समय है, जो ठहराव की मांग करता है कि आप ठहर करके बच्चों के साथ किसी विषय पर बात करें, या फिर आप उनको बाहर ले जाएँ, उनके खेल में भागीदार बनें, खेल के दौरान वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं आपस में, उसको देखें। ये सब चीज़ें बहुत सिकुड़ती हुई नज़र आई हमें पिछले कुछ समय में। तो और ये एक डर भी रहता है कि अगर और ये कहा जाता है कि आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जिसमें बच्चे के लिए सुरक्षा रहे। उनको आप खेलने के लिए बाहर मत ले जाइए क्योंकि वहाँ चोट लगने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो ये सब हमें बहुत परेशान करता था कि अगर बच्चे सारे समय क्लासरूम में ही बैठे रहेंगे और जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, भले ही पक्का ग्राउंड है लेकिन आस-पास पेड़-पौधे हैं, उनको देखेंगे ही नहीं। तो और हवा को महसूस नहीं करेंगे, नेचर के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे, जो वो क्लासरूम में सीख कर आ रहे हैं उसको बाहर नहीं देखेंगे। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? लर्निंग को लेकर के भी हम किस तरफ जा रहे हैं, सीखने को लेकर के किस तरफ जा रहे हैं। तो हमने यही सोचा कि इसके लिए हमें थोड़ा-सा अपना जो रवैया है, वो रिस्क टेकिंग जिसको कहते हैं, कि वो रखना होगा। कि एक तो हमें लगातार नेगोशिएट करना पड़ता है अपनी स्कूल अथॉरिटी से इन सबको लेकर के, और इस नेगोशिएशन में आपकी नॉलेज बहुत काम आती है। मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज बिकम्स पावर एट दैट टाइम, जब आप रिसर्चर जो नई-नई रिसर्च हुई हैं, जो खेल को या प्लेग्राउंड्स को या नेचर से जुड़ने को और किताबी जो नॉलेज है,
टेक्स्ट बुक जो नॉलेज है उसके जुड़ाव की बात करते हैं, जब आप इस तरह की बातें करने लगते हैं कि नहीं ये कितना इंपॉर्टेंट है, हम हर वक्त डर के ही नहीं रह सकते कि अच्छा बच्चों की इनसिक्योरिटी है तो हम नहीं करेंगे ये काम। तो वो चीजें हमारे कुछ साथियों ने और मैंने भी अपने स्कूल में शुरू की कि भले ही हम कितना ये कहा जा रहा है या इस तरह के ऑर्डर्स रहते हैं, पर हम लगातार इस चीज के लिए नेगोशिएट करेंगे कि हम अपने बच्चों को उस तरह से जैसे हमें लगता है कि जो उनको बेहतर सीखने में मदद करेगा, तो वो चीजें हम इनिशिएट करेंगे। Yes. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा लगता है कि दोनों ने जब शुरुआत में अपनी बात रखी है, उसमें एक अपने अंदर का ड्राइव is very important. And I think what you have shared is that you are able to use negotiation and a persuasion perhaps to convince the school authorities that there are certain things that can be done differently, which are in the interest of children, specifically in connecting children's school knowledge with their lived experiences and with nature and so on. तो मुझे लगता है यहाँ पे it's interesting that we could probably pick up a strand of the personal self of both of you. And I think Amir has an interesting question there, perhaps. Amir, would you like to come in? Yeah. Well, you put me on a spot, but yes, I guess for me, what is important is to understand that why you are doing what you are doing. Of course, we understand that there are a lot of options before us, but you have chosen this, and you have been here, and you're holding on to it. It's very important to understand because for all of us who are in various professions, we are also struggling with many issues. Most importantly is that to understand and to recognize that we are located somewhere, there's some agency that is structurally available, and there is a purpose that we need to serve. And it's and if we start speaking with many people, we understand that everyone has a distinct story, and it's important to understand why do you love teaching so much. It's so inspiring. It's so evident, and both the way in which you are speaking about teaching, but also in terms of how you are in a nice way defending, even if there are structural flaws that are quite evident. So, would love to hear about your personal journeys. मुझे ऐसा लगता है कि सर इस प्रोफेशन में रहने का और यहाँ जो है वो हम क्यों कर रहे हैं या क्यों चुना, अ, इसमें मुझे लगता है एक अ, व्यक्ति के अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उसकी खुद की एजुकेशनल जर्नी और उस एजुकेशनल जर्नी के दौरान जब आप हायर एजुकेशन में आते हैं, उस समय आप क्या जान रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और दुनिया को देखने का क्या नज़रिया बना रहे हैं। ये मुझे लगता है कि 2 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें रहीं मेरी ज़िंदगी में तो ख़ास तौर से, कि एक मेरी अपनी पर्सनल जर्नी और दूसरा मेरी जो हायर एजुकेशन है, स्कूल एक्सपीरियंसेस भी, पर्सनल जर्नी जब मैं कह रही हूँ स्कूल एक्सपीरियंसेस भी उसमें, और इस स्कूल एक्सपीरियंसेस से निकलने के बाद जो मेरी हायर एजुकेशन हुई या मेरी जो टीचर एजुकेशन का जिसका मैं हिस्सा रही, वहाँ मुझे लगता है कि वो पर्सपेक्टिव मुझे मिला कि दुनिया को देखने का वही नज़रिया नहीं है जो मैं पिछले 12, 15 या 18 या 20 सालों से समझ रही थी। और मैं अक्सर ये इस्तेमाल करती हूँ ये बताने के लिए कि हम बचपन से स्कूल में जब किताब का पहला पन्ना खोलते हैं तो उसमें संविधान की जो स्थापना है, प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पढ़ते रहते हैं। और भले ही स्कूल में उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, पर बच्चे तो करेंगे ये सब चीज़ें कि अपनी किताबों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो जब वो मैं पढ़ती थी, मतलब मेरे लिए वो किताब का एक कवर पेज या कोई हिस्सा हुआ करता था एक समय में। लेकिन जब मैं अपने हायर एजुकेशन में आई, तो वो मेरे लिए जीवित हो गया वो पेज। मुझे ऐसा लगता है उसने ज़िंदा किया उस
पेज पर लिखे हुए हर शब्द को, मेरी हायर एजुकेशन है और मेरी टीचर एजुकेशन है कम से कम, वहां से मुझे अपनी जिंदगी का कम से कम ये विजन मुझे समझ आया कि शिक्षा में या एजुकेशन में बहुत ताकत है। मतलब एक पर्सन को ट्रांसफॉर्म करने की, एक व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करने की, और व्यक्तियों के माध्यम से समाज को ट्रांसफॉर्म करने की। कम से कम कोशिशों का जज्बा तो है। भले ही हम बहुत दूर तक जाएँगे, नहीं जाएँगे, कितना दूर तक जाएँगे, वो एक अलग विषय हो सकता है बातचीत करने का, या वो बहुत ही डिबेटेबल भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि आपकी हायर एजुकेशन और आपकी टीचर एजुकेशन में बार-बार फ़ोकस कर रही है कि वो आपको एक विज़न और एक पर्सपेक्टिव देती है, दृष्टि देती है कि आप क्या किस तरह की दुनिया की संकल्पना को अपने दिमाग में बना रहे हैं और देखना चाहते हैं। वहीं से मुझे लगा कि मैं टीचिंग के मैं बाय डिफ़ॉल्ट उस प्रोग्राम में आ गई थी, टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम में। जब मैं बाय डिफ़ॉल्ट कह रही हूँ तो मैं जानकारी के अभाव की तरफ इशारा कर रही हूँ कि मुझे बहुत नहीं पता था कि ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, किसी ने मुझे बताया और मैं वहाँ आ गई। लेकिन मुझे पता है कि वहाँ की हर क्लास में चाहे वो साइकोलॉजी की हो, सोशियोलॉजी की हो, चाहे फिलॉसफी की हो, या दूसरे तरह की जो करिकुलम्स होते हैं, थिएटर, सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप, उन सब ने मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों को, जो कहीं दब गए थे, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं और हमारी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। और उनसे हम कभी उबर नहीं पाते। उन सबको ज़िंदा किया, उन सब पर सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का मौका दिया, और वहीं से मुझे लगा कि स्कूलों में कितनी पॉसिबिलिटी है अगर एज़ टीचर मैं ये सब वहाँ लेकर के जाती हूँ। और क्लासरूम क्या मुझे वो स्पेस देगा, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आई जब मैंने अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम किया बीएलएड के 4th ईयर में। वो थोड़ा लंबे समय तक हम रहते हैं उसमें। वो एक ऐसा मतलब टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, जिसने प्राइमरी एजुकेशन में रहने रहने के लिए और काम करने के लिए और लगातार उस पे सोचने-समझने के लिए अ, मेरे अंदर कुछ पैदा किया। शायद वो मोटिवेशन हो सकता है या कोई ड्राइव, आप उसको नाम देना चाहें, हो सकती है। लेकिन ये विज़न की इस जगह में बहुत पॉसिबिलिटीज़ है और यहाँ रहना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बस जल्दी से इसमें जोड़ देती हूँ कि जब मैं गई स्कूल में काम करने, और खासतौर से प्राइमरी टीचर के तौर पर, मुझे लगता है आपकी क्लासरूम और आपके जो स्टूडेंट हैं, वो आपको इस प्रोफ़ेशन में बने रहने के लिए एक इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फ़ोर्स की तरह काम करते हैं। उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी बातचीत, उनकी ज़िंदगियों में आपकी चर्चाओं की वजह से, आपके इंटरैक्शन की वजह से, शायद आपकी वजह से कुछ ट्रांसफ़ॉर्म होता है, जो आप रोज़ देखते हैं। जी, थैंक यू सो मच। So, just to for non-English speaking, for English speaking audiences, I will summarize that you are emphasizing on the fact that you were lucky that you got into a program that opened your mind, allowed you to fly, dream, and which means that the role of teacher education uh, is not to be taken very lightly, and it has to be thought of very carefully because they outside of houses they are the first contact that a small child is making, and you are emphasizing that. And I remember in many conversations that I've had with Poonam, uh, and I have seen her engaging with small children, and she has very candidly told me that something stirs inside me when I see children, and and it just it's so powerful. The experience becomes so powerful. So I can imagine that once you get addicted to it, you cannot come out of it because it's so fulfilling in many ways. Richa, your story. Yeah. So, sir, I always like believing that I did not choose teaching; it chose me. Uh, and I have with a lot of, emotion and force, I have resisted teaching for the longest time. And once I was passed out from class 12th, similar to Rajni, I happened to appear for BLED. And then, by some lucky circumstances, I took my admission. And that is where my transformation started happening.
It was not it didn't happen in first few months also. Why I resisted was my mother is a teacher. She used to teach, and I absolutely disliked the grind where she was going every day in the morning, coming back in the afternoon, mostly very tired. She didn't really had time for us and energy left. And I was like, no, I don't want this. This is not how I want to be. So, but slowly and steadily, it's a 4 year course, and I'm very happy that it's a 4 year course. It gave me so much opportunity to discover myself, to relook into what I think is important, to understand things around me, things inside me in a more clear fashion. And by the end of 4 years, I knew that this is what I have to do. And I, through since that day, I think it is not I have chosen teaching. It has always chosen me. I cannot think of myself like, even without the job, I think I am a teacher, even when I am not in the class, even when I'm not selected by some position for some position or something. It continues to be with you. And by teaching, it's not like I mean that I'm constantly explaining things. I'm also constantly learning things. I'm also constantly looking at my actions. I'm reflecting. And that is what I've learned throughout my training, that this is, I think, the most key part of evolving and making yourself a better teacher. And of course, I agree with Rajni that this is probably one of the few professions in the world where you get your feedback almost instantly. You see the joy, you can see the apprehension, you can see at times a wave of emotions. And then you also have the opportunity to see something which is shifting by your words or by your actions. So, yeah, sir, there are a lot of systemic problems, but apart, there's a lot of hope as well. And this is a very satisfying thing, I guess. Excellent. I'll just make one or two points and then I'll hand it over to Poonam for the next round of questions. I I uh, have known about you, but have met you, both of you, very briefly. I have known Poonam for a very long time, and we have had many discussions, etc. But and she has been telling me time and again that we have to take teacher education very, very seriously. It's not a tick mark exercise, and I can see what it has enabled. A good teacher education program, what it has enabled. Both of you are very good examples of what it has enabled. But one thing I want to also uh, highlight here, and you are also reflecting that in some ways, and Poonam has also told me about this. I think in Hindi it's called ठहराव, like you be at it and you keep talking about it. And I think we have lost the uh, the plot in terms of being patient and staying with things, because we like in this instant gratification world, we are so scared of getting exposed, because and that's why we are not staying. So it's that fear. And one of the important things that this DLED program has done is given you that power to with stay with something. And I think that kind of every individual will discover what is good and what is right. It's about staying with something for a long time. So thank you for sharing your thoughts, and I will hand it over to Poonam. Thanks, Amir. I was thinking that yeah, it does sound that many things are possible because of the way both Rajni and Richa are sort of speaking to us with that level of confidence and a sort of hold over the fact that they can create spaces for themselves. Since our MOOC is also about looking at issues of equity around teachers' work and, with children, with teachers in schools. My next question to you, Rajni, is
what kind of hierarchies and power structures do you, as practitioners, as teachers, experience within the education system and within schools? Because I'm sure you're also engaging with the larger education system. So, what kind of power structures do you see, and how do you look at it? I mean, what is your understanding of this? मैम स्कूल विद इन स्कूल अगर मैं पूरी बातचीत में देखूं कि हम पावर स्ट्रक्चर को या पावर हायरार्की को कैसे समझते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ प्राइमरी टीचर आप बहुत ही लोएस्ट लेडर पर हैं और आप क्रूशियल यूनिट तो हैं, पर आप सबसे निचली इकाई भी हैं। तो एक तो आप पर ध्यान कितना दिया जाएगा, आपको सुना कितना जाएगा, ये आपकी इस पोजीशनिंग से तय होता है स्कूल सिस्टम में और लार्जर एजुकेशन सिस्टम में। और दूसरी चीज़ ये है कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इस पावर स्ट्रक्चर में अपने आप को, अपनी एजेंसी को एक्सरसाइज करने के लिए। और मुझे लगता है कि वो डिसीजन मेकिंग एज टीचर हमारी लार्जर सिस्टम से में बहुत लिमिटेड है और मैं कहूँगी कि शायद है ही नहीं, खासतौर से प्राइमरी टीचर्स के लिए कि वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं रहते हैं। उन्हें उन्हें कब, क्या, किस तरह से चीज़ें करनी है, ये सब कहीं से तय होता है। किसी अथॉरिटी से तय होता है, किन्हीं पॉलिसीज़ से होता है और आपको सिर्फ़ उसको फ़ॉलो अप करना होता है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर और आपको भले ही ये लगे कि ये कितनी लाइट रिसर्च में की गई हैं ये सब चीज़ें, जो भी आपको बताई जा रही है इनका कोई थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा या कोई रिसर्च बेस नहीं नज़र आ रही है। एग्जाम्पल दोगी? यस। मैम जैसे पिछले दशकों में कुछ ऐसे करिकुलम इंट्रोड्यूस किए गए इस क्लासरूम में, स्कूल्स में, जो ये कहकर इंट्रोड्यूस किए गए कि ये बच्चों की खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों में बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है, टीचर में बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो हम लोगों को इस तरह के करिकुलम इंट्रोड्यूस कराने चाहिए जिससे बच्चों के जो दिमाग में फँसा हुआ ये तनाव है, ये स्ट्रेस है, ये कम हो, टीचर्स की ज़िंदगियों में भी ये कम हो। तो इस तरह का एक करिकुलम लाया जाता है और उसको कैसे कराना है, मैं एक उदाहरण दूँगी कि उसमें ना कहानियाँ थी जो हमें बच्चों के साथ लेकर जानी थी, बच्चों के साथ इस क्लास में उन कहानियों पे बातचीत करनी थी। वो कहानियाँ 2-2 पैराग्राफ की थी और एज़ टीचर और क्योंकि मैंने लैंग्वेज में ही अपना काम किया, रिसर्च का काम किया, पीएचडी की, तो मैं ये जान रही थी कि ये कहानियाँ नहीं हैं। इनको क्लासरूम में लाना और इन पर बातचीत करने का बहुत ही मतलब ये बहुत बेईमानी है कि आप बच्चों के साथ इन चीज़ों पे बात करें। वो एक तरह का डायरेक्ट वैल्यू टीचिंग जैसा लगता था। तो इस पर हमें इन सर्विस प्रोग्राम्स हुए, बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई। उसमें बार-बार ये कहा गया कि आपको ये ही कराना है, आपको शब्दशः, वर्ड टू वर्ड ये कहानी करानी है। आप इसमें कोई वर्ड अपनी तरफ से जोड़ेंगे नहीं। सवाल जो दिए वही सवाल पूछने हैं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछना। तो इतना टाइट और स्ट्रिक्ट था और इस पर जब सवाल किए गए कि भई आप ऐसा मतलब आप इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं टीचर्स के साथ में जहाँ वो इतनी डाइवर्सिटी के साथ डील करते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डील करते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएँगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इसके कंटेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप सुनिए जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, पर आप इसमें ना कुछ ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज़ इट इज़ किताब आपके टेबल पे होनी चाहिए, खुली हुई जो आप करा रहे हैं। तो अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि पावर हायरार्की कितनी स्ट्रांग है और जो टीचर है खासतौर से प्राइमरी टीचर वो अपनी हैसियत और अपनी पोजीशनिंग और अपनी सोच समझदारी और इस पूरे स्ट्रक्चर में इसके साथ कैसे जूझते हैं। थैंक यू। Thank you. Basically, Rajni's shared with us that the power hierarchy, is very sort of well entrenched in the system. Kyuki, even with regard to, for example, a particular kind of curriculum that is introduced by the state, teachers are expected to follow it by the dot of the I and the cross of the T. And that is where they find themselves unable to exercise the kind of agency they would like to,
in adapting curriculum to suit the needs and the diversity of the classroom. Ma'am, if I can just add one thing. Yeah, please. Yeah, I like completely agree to what she has said, and I would just like to add that there is a very strong feeling of mistrust. Each person in the ladder mistrusts the ones who are lower with a lot of vehemence, and because of that mistrust, I think they don't leave any space. They would not like to leave any space for their own agency or for their own innovation or for their own creativity, and that is reflect that does reflect in a lot of systemic procedures that they we receive orders for. Right. So I think this question of, the space for the teacher to exercise her, or rather claim her space as an educator, is obviously something that we need to come back to also, because I think we have not exhausted this whole thing. But I'd like to just move ourselves into another space, and I'd like to ask Richa. Questions of equity, even amongst children, let's say, right? Now, for example, I'd like to ask you, what kind of measures do you as teachers adopt in the classroom space, in the school space, for equal access and opportunity for all children? We have the EWS reservation in private schools, so that's a little bit of a different matter. In government schools, we know that the bulk of our children coming into government schools may be from very diverse backgrounds, but socioeconomically, they come from modest, less than modest backgrounds, if I'm not wrong about that. So, how do you, as teachers, uh, use your capacities, your thinking, your ideas to provide equal access to all children, and ensure that all children are participating in learning? Ma'am, as you very rightly put that uh, like we are working with children from marginalized sections. So, and among those margins also, there are a lot of complexities. And it is not it's not very simple or very homogenized setup in a classroom, but it is also a challenge to address each and every difference and take everything equally in all your plans and all your transactions. However, I would like to add that curriculum provides those spaces. There are the syllabus, the curriculum, the textbooks have those spaces where you can open the ground for discussion, where you can talk to the children in a manner through the curriculum, and you can take those discussions and allow their experiences from their homes, from their neighborhoods, to come into the class. And I think because I'm dealing with the middle school children, they have their own reservations. They are very set in the idea of what can be spoken about in the classroom and what can't be. So, as a teacher, my my first responsibility becomes just to make them comfortable, to provide them a safe space where they're not judged, where they're not told right or wrong. They can be what they want to be, and they can share freely. So that does take time. And I'm not saying that these are readily available spaces. These have to be created, these have to be negotiated, and these have to be constantly, one has to remind themselves that the whole idea of education is not just about creating results or having some deliverables have to be done, things that have to be, these are the more important issues, these are the more important ideas which need to be shared in the classroom collectively. So I'll just give you an example, ma'am. Last year there was this a rape case in Calcutta, which was very protested, and because girls were very agitated with the whole thing and how the things were proceeding. So one day when I just entered the class, they told me that, ma'am, we want to ask you something.
And I was like, I was expecting it would be something related to what we are doing, but they just started asking me, what do you think? What happened was right. And that day we had a wonderful discussion for the whole 40 minutes. And I was surprised by because it was not something that does not touch them. But I realized that they had so many opinions, and most of them were coming from the larger society. Like, even in these cases, women also might have done something. Girl is also at fault. This is ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती है. These popular ideas and beliefs, and then I no opinion. We just deconstructed all these layer by layer. And by the end of it, they did realize, and there were some of them who came and spoke on it later also. And I thought this might have been one of the best sessions I had. So, because I could create that trust where they could bring their anxiety into the classroom, and because they were so confused by all the ideas they were listening at their home or through the TV news channels, that I took it as a little as a compliment as well, that they chose me to discuss this, and they thought that probably I'll give them a yes or no answer. So we had a very healthy discussion, and I think these spaces will not come naturally. They are not woven into these policies and orders. But yes, there are spaces. If you would want to, you can easily create those spaces. And equity is a very, very important question, because if we do not uh, teach the children to be critical about their approach, critical about what they are listening, what they are hearing, especially in these age of where they are inundated with all kind of news and things happening around them. It then simply just grades and marks would not make a lot of sense. Thanks very much. I mean, it's interesting that something that's happening in society actually becomes part of your curriculum, because the children have asked you. Now, supposing the children didn't ask you, would you still bring it into your discussions, into your curriculum? I think, ma'am. Yeah, please continue, ma'am. No, I just thought I'll ask you a very straight question. Yeah, I think this happened because I usually try because I have the privilege of teaching literature. So I try and bring examples from their lives and things that are happening right now. So perhaps that was also a motivation where they wanted to discuss this with me, because there could be limitations to certain subjects also. Like mathematics and sciences perhaps are more structured in that way, but literature allows a lot of things to flow in the class. So yes, we usually discuss a lot of things that are happening apart from what they would want to discuss. So yeah. So, what I'm hearing is that curriculum is not something you treat as textbook knowledge alone, that it's much more than that. मैम हाँ, आप भी कुछ कहें, और साथ में एक सवाल और है. I would like you to also consider telling us your observations about how caste, class, gender, religion, community, all of these intersect in the learning spaces, within the classroom, outside the classroom. I mean, please respond to what Richa was saying and also add this in. Thank you. मैम जैसे रिचा ने बताया और आपने ये कहा भी कि क्या अगर बच्चे बात नहीं करते तब आप क्या करते? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहुत चीज़ों के प्रति बहुत अवेयर होते हैं, उनको सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको भी परेशान कर रही होती है जो आपकी आस-पास की दुनिया में चल रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है प्राइमरी टीचर होने के नाते मैंने ये बहुत महसूस किया कि हमारा जो शहर है, उस शहर में बहुत कुछ घटा पिछले 10 सालों में। और वो कई मायनों में बहुत डिस्टर्बिंग था, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी शायद। और और जब आप उन सब से जूझ रहे थे तो आप लगातार और अगर आप क्लास में बच्चों से बहुत डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो अपने ग्रुप में जब बातें करते हैं तो आप तक पहुँचता है कि वो क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और किस तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि करिकुलम में वो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि आप उन सब घटनाओं को जो आपके आस-पास घट रही हैं,
उनको ले आए। जैसे कि एक ईवीएस का एक चैप्टर है, किसान की कहानी, बीज की जवानी, बीज जो है उसकी जवानी। तो उसमें हम लोग ये मैंने बहुत कॉन्शियसली डिसीजन लिया था ये चैप्टर क्लास पे जिस दिन मैंने शुरू कराया, क्योंकि उस समय दिल्ली शहर में कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही थी और आसपास भी, कि किसानों के बारे में हम बहुत सुन रहे थे, जान रहे थे, और काफी कल अलग अलग तरह के नैरेटिव्स थे, और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉपुलर मीडिया नोशंस भी थे जो आपको आपको एक एज कॉन्शियस बीइंग बहुत डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो ये कहानी उस दिन शुरू हुई हमने जब ये पढ़ना शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो चैप्टर था वो क्लास में सिर्फ चैप्टर नहीं रहा, फिर वो जिंदगियों की कहानी बन गया। और वो जो अनुभव बच्चे कर रहे थे या वो सुन रहे थे, जो भी मीडिया में चल रहा था, आसपास चल रहा था, वो क्लासरूम में बहुत साफ तरीके से आया। और उसमें जो दोनों पर्सपेक्टिव हैं कि किसानों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो जो अपने किताब में पढ़ रहे हैं। उनकी एक जर्नी है, उनके स्ट्रगल हैं, उनके साथ क्या-क्या होता है या क्या-क्या होता रहा है, और एक वो जो अपनी दुनिया में देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि करिकुलम में और कई बार हमारी अपनी तैयारी और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम कब क्या कैसे शुरू कराएँ। अगर इसके बारे में हम समझते हैं, तो ये हम बहुत बेहतर तरीके से शायद ले जाते हैं कि अपने आस-पास में जो भी ऐसी घटनाएँ हैं कि हम उनको ले आएँ जो इक्विटी, इक्वालिटी और ऑपरेशंस या शोषण जैसे जो मुद्दे हैं, उनको डील करती हैं। यस, आपका जो अगला सवाल था कि कैसे स्कूल के स्पेसेस में कास्ट, क्लास, जेंडर ये सब इंटरसेक्ट करते हैं एक लर्निंग स्पेस पे। तो मैम मुझे लगता है कि क्लासरूम में भी और विदिन विदिन द मतलब कलीग्स के बीच में भी। स्कूल में जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट भी हैं और टीचर्स भी हैं जो आपस में एक-दूसरे से सीख रहे हैं। और मेरी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ये कि यस, स्कूल में जितनी भी वेलफेयर स्कीम है खास तौर से, जब हम उनको लेकर के सुनते हैं, फॉर एग्जांपल एससी-एसटीज़ के लिए स्कॉलरशिप का आना, या किशोरी जो लड़कियां हैं एडोलसेंट एज में जो है उनके लिए सैनिटरी पैड्स का अवेलेबल होना, जो वेलफेयर स्कीम है उनके चलते, तो कैसे वो टीचर्स के बीच में एक डिस्कशन का पार्ट उस तरह से बनते हैं कि इतना स्कॉलरशिप लेने के बाद भी ये लोग स्कूल नहीं आते हैं, या इतनी फैसिलिटीज मिलने के बाद भी ये लोग कुछ पढ़ते लिखते नहीं हैं, खासतौर से लड़कियां। तो एक तो वो लड़कियां, ऊपर से एक खास तबके की लड़कियां जब वो स्कूल में आ रही हैं तो कैसे उन स्कूल उनको एड्रेस कर रहा है, टीचर्स जब उनको ये सब बोल रहे हैं या इस तरह का नोशन है, तो ये उनके उस लर्निंग स्पेस को कितना सीमित करता होगा, डिस्टर्ब करता होगा या चुप करता होगा। ये ये मतलब बहुत ये ऐसे मुद्दे हैं जो नज़र आते हैं आपको। ठीक उसी तरह से अगर आप कलीग्स के बीच में देखेंगे, तो आप किस किस क्लास से आ रहे हैं, किस कास्ट से आ रहे हैं और आप किस पोज़ीशन पर हैं। आपकी पोज़ीशन पर आप एक किसी खास पोज़ीशन में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप स्कूल के हेड हैं, और आप लेकिन क्लास और कास्ट वाइज़ एक भारतीय समाज में उस तबके से आ रहे हैं जिनको हम निचले तबके का लोअर लेडर पे मानते हैं। तो कई बार उनके डिसीजन को, उनके हर एक्शन को इस तरह से देखा जाता है कि क्योंकि ये इस कास्ट से आते हैं, क्योंकि ये इस क्लास से आते हैं और क्योंकि ये महिलाएँ हैं, उनके घर में तो कोई सुनता नहीं है, यहाँ के इसलिए बॉस बनती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये स्कूल के उस पूरे एनवायरनमेंट में रहती हैं, और फिर जब आप उनको सुनते हैं, तो आप क्या तैयार करके आए थे, क्या पढ़ाने जा रहे थे, वो भी आपका डिस्टर्ब होता है। तो एक लर्निंग स्पेस की तरह अगर हम स्कूल को देखें, तो दोनों हिस्से, आपकी क्लासरूम और आपका क्लासरूम का बाहर का एनवायरनमेंट अ, आपको बहुत कुछ बता रहा होता है, और आपके स्टूडेंट को भी बहुत कुछ बता रहा होता है। आपके स्टूडेंट कितनी खुशी से स्कूल आएँगे, कितनी खुशी से नहीं आएँगे। ये कई बार उनके जेंडर से तय होता है, कई बार वो किस क्लास से आ रहे हैं उससे तय होता है। कई बार वो किस रिलिजन से आ रहे हैं इससे भी तय होता है। इस तरह से मुझे लगता है ये इंटरसेक्ट करते हैं। जी। तो मुझे लगता है it will be a good idea for us to also understand that when you look at these inequalities, हुँ।
let's say amongst children, or you said even amongst peers, but let's talk of children. How do you handle them pedagogically, by curriculum, by the way you interact with children? How do you handle them? Can you give us some concrete examples? I'd like both Richa and Rajni to respond to this. यस मैम, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण ये दूंगी कि एक तो आप कितना बात करते हैं अपने बच्चों से। सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारी दुनिया में, टीचिंग की दुनिया में और स्कूल में बच्चों से बात करने को लेकर के बहुत अलग तरह की अवधारणा है कि इनसे क्या बात करनी है, इनको सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ाना है। हाँ, तो एक तो ये कि आप जब उनसे बात करते हैं, आप उनसे सुनते हैं और वो आपको सुनते हैं। ये एक तरह का रेपो बनना आपके और आपके स्टूडेंट के बीच में। और दूसरा, जैसे कि मुझे इसमें भी बहुत पॉसिबिलिटी करिकुलम से और सिलेबस से आती हुई लगती है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक ईवीएस का एक चैप्टर है 5th क्लास का, फांदली दीवार। इसमें मुंबई की एक शहर है जिसमें कुछ 15-13 साल की लड़कियां हैं, स्लम में रहती हैं और मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं। उनकी स्टोरी 2007 में इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया। उसके बाद उनका जो इंटरव्यू है पूरा वो किताब में दिया गया। तो मैं बस ये बता रही हूँ कि कैसे ये सब मुद्दे उस चैप्टर से जुड़ गए और कैसे आए और कैसे आगे बढ़े। तो इस चैप्टर में वो लड़कियां बता रही हैं कि अच्छा, हम तो देखा करते थे लड़कों को फुटबॉल खेलते हुए, कभी सोचा नहीं कि हम जा सकते हैं। पर एक दिन एक लड़की गई, फिर 2 लड़कियां गईं, फिर वो आपस में मिली, फिर उन्होंने बातचीत करना शुरू किया। तो लड़कों के लिए तो सब खुश होते थे कि ये फुटबॉल खेलती हैं, लेकिन हमारे लिए सब नाराज होते थे। घर वाले भी हमें कहते थे फुटबॉल खेलना क्या जरूरत है। तो इस तरह का ये एक चैप्टर है ये, और बीच बीच में इसमें सवाल है। तो मेरी क्लास में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो ये इस और सवाल जो थे वो इस तरह से कि आपको क्या लगता है कि किस तरह के खेल लड़कियों को खेलने चाहिए, किस तरह के नहीं खेलने चाहिए? लड़के और लड़कियों में काम को लेकर के आप क्या देखते हैं? किस तरह के काम लड़के कर सकते हैं, किस तरह के लड़कियां कर सकती हैं? तो पहले तो उन्हीं के नोशंस बाहर आए, वो क्या सोचते हैं, क्या सुनकर आए हैं ये। और जब ये चैप्टर अंत की तरफ गया, बहुत जल्दी से इस पर आ रही अंत की तरफ गया, तो इस पूरी बातचीत में जो किरदार हैं, वो किरदार इस तरह से बात कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट उस स्टोरी में एंटर करता है कि अच्छा, इसके दिमाग में इसलिए ये सवाल आ रहा है, इसलिए ये ऐसा कह रही है। और एक लड़का मेरी क्लास में आता है, सॉरी, इससे पहले एक चीज और होती है कि एक सवाल है कि फांदली दीवार इस चैप्टर का नाम क्यों रखा है, इस पाठ का नाम फांदली दीवार क्यों रहेगा। आप यकीन मानिए, अंत में जाके ज्यादातर बच्चों ने जवाब दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप दीवार, ये कौन सी दीवार थी, क्या ईंट पत्थरों की दीवार थी जिसको फांदा गया? तो बच्चों ने कहा नहीं, ये भेदभाव की दीवार, ये जो लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव होता है उसकी दीवार थी। और आप मानिए, उस चैप्टर के सबसे अंत में नीचे बहुत छोटा सा एक पिक्चर दे रखा है जिसमें एक लड़की पहले खड़ी होती है, फिर थोड़ा सा ऐसे हाथ करती है, फिर और हाथ करती है, और फिर वो उड़ने जैसी पोजीशन में आती है। तो वो मेरे पास आया, कहता मैम देखो, ये आजाद हो गई। तो मैंने उसकी तरफ बहुत देर तक देखा, कहा किससे? कि अरे, इसको सब कहते थे ना, ये मत करो, वो मत करो, ये उससे आजाद हो गई। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि कैसे ये जेंडर का जो पूरा नोशन था हमारी क्लास में, लिबरेशन से, मुक्ति से जुड़ा। हाँ, और That's कैसे ये पॉलिसी। very interesting example Rajni has given about a particular story in the textbook and how gendered behaviors can be, but the story leads them to look at how you can overcome gender inequality by way, and how and these must be class 4 or 5 children. Five. So they were Yes. a little older, so they could actually even sense at the end of the lesson, because a lot of their own personal stereotypical notions came out and Rajni handled them. And at the end of it, they were able to see what the purpose of that story was, which is to actually, and the metaphor of the wall was really the metaphor of the discrimination between girls and boys, and how that story enabled children to see that that is what needs to be overcome. So that's a very interesting example, which means that knowledge that is within our school textbooks is very critical. If you don't have stories like this, then there are all kinds of issues. And
perhaps you can have stories with all kinds of stereotypes being reinforced. Richa, would you like to give us any example of your strategies and what you have been? Yes, ma'am. Like, not exactly. I just like we have seen this in practices in our school also, and it is a very common and probably ingrained, not really thoughtful, but ingrained practice of starting any function with Saraswati Vandana. Whereas we are talking about the issues of, secularism. So I had this opportunity where we had this discussion once that, ma'am, why are the lamps always lit and why is there always Saraswati Vandana? This started because some students could not participate in the singing because they didn't know the Saraswati Vandana, and they were not they were coming from a Muslim community, but they were good singers. So we started this discussion, and then I just then that this I had this opportunity to discuss it at length, and we had at the conclusion or at the end we realized that how important it is to see how uh, every action has to be thought, every action has to have a meaning, or you at least have to reflect and understand why something is done and why something is not done. So the students realize this, but I still find it challenging to convince all the teacher community to stop the act of Saraswati Vandana. For them, this is a very pious thing, and they say that this is for all religion. They have come to the point where they are convincing me by saying that this happens everywhere. So yes, what Rajni said, you can find spaces in curriculum, you can do a lot of things, but at some certain point, children, the elder children learn that this is the textbook knowledge and this is the functional knowledge. This is a very difficult wall to break, and I have come across this a lot of times when I've realized कि मैम ऐसा होता है पर ऐसा बोलते थोड़ी है. So, the thing that your constitution is telling is absolutely right until you have to write it in your examination. You have to do your papers. And then what happens in practice is something entirely different. It is very sad and disappointing, but because they have grown to the level where they're seeing this dichotomy. And honestly, it is not always very easy to break this dichotomy. The only solution I could offer them was that you understand, you have to reflect. That is how these changes will come, probably when you lead the charge, when you become. And I have been making my efforts which have not really been fertile. So yeah, that is how there are successes, but there are, you know, no places where you fail as well. Yes, Raj. Ma'am, can I add but something very important which I forgot? Uh, apart from the curriculum और your discussion, मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर एक बहुत अच्छा माध्यम बनता है क्लासरूम में इन सब मुद्दों को डील करने का, और ये हम लोगों ने स्कूल में किया. मतलब मैं अपने एग्जांपल से तो बता सकती हूँ कि हम लोगों ने स्कूल में थिएटर फॉर ऑपरेस्ड करके एक है जो ग्रुप है जो ये सब मुद्दों को डील करते हैं. उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और जब उन्हें स्कूल में बुलाया तो उन्होंने इस तरह की स्टोरीज थिएटर के माध्यम से प्रेजेंट की स्कूल में, जो समाज में जुड़े इन मुद्दों से डील करती हूँ. तो ये एक बहुत ही, मुझे लगता है पेडागोजिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है मेरे लिए, तो कम से कम कि क्लासरूम में इनको लाने का, डिस्कस करने का, इनमें जीने का कि आप पढ़ते हैं उस सिचुएशन में, फिर आप बताते हैं. आई एग्री, बिकॉज आई थिंक क्योंकि ये उनको अपने आप लार्जर सोसाइटी से स्कूल को आइसोलेट नहीं कर सकते. आप हर जगह डाइकोटमी, आप हर जगह पोलैरिटी देखेंगे. सो दिस प्रिपेयर्स देम फॉर द पोलैरिटी एंड आल्सो टू क्वेश्चन कि क्यों है. दे you can't change everything, but you can change how you think about those things, how you perceive them. I think that is something that was a key takeaway from me also from. So it's very interesting because there are some popular notions and conceptions people have about state schools. One, of course, that very marginalized children go there, and that government school teachers, they don't really care. And they take a good salary, and, and also they're very
guided by whatever the state tells them to do, theater की बात, curriculum और pedagogy में inequality को लेके आना, talking about gender. I mean, it's sounding music to the ears. So it's interesting that you have shared this with us. But how do you deal with this pressure of showing learning outcomes? Because that seems to be the obsession of the state and state policy. So how do you deal with that? And what kind of dilemmas you face in this context, which also psychologically challenges you? Because it must be a stressful situation also. Briefly, if you can tell us this, because now we have probably just about half an hour left, and I can see that there are quite a few questions already in the Q&A. So maybe a minute each, and Amir can add after that. Richa, would you like to speak first? Yeah, you can go, Rajni. मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, सिस्टमिक लेवल पे हम बहुत एक किस्म की जल्दबाजी में जी रहे हैं। जल्दबाजी एक लर्निंग लेवल को अचीव करने की, एक डेटा को जनरेट करने की और उस डेटा को शो ऑफ करने की भी बहुत बार ये प्रेशर एक रहता है कि आप लर्निंग लेवल्स को देखिए, बच्चे यहाँ पहुंच इस क्लास में आ गए तो उन्हें इतना तो आ जाना चाहिए, इतना तो सीख जाना चाहिए। और ये कई बार बहुत सारे टीचर्स की जिंदगियों में बीमारी का कारण भी बन रहा है, चाहे वो मानसिक बीमारी हो या शारीरिक थकावट हो, ये है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्कूल में हैं और आपके स्टूडेंट आपके साथ में हैं और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने वाला है, तो आप मुझे लगता है मैं पर्सनली डेटा के साथ उतना डेटा को लेकर के उतनी परेशान नहीं हूँ कि लर्निंग आउटकम का जो डेटा है या लर्निंग आउटकम का जो है वो मुझे मिले हैं नहीं मिले हैं, ऐसे आउटकम जो एक लार्जर सिस्टम मुझसे चाह रहा है। तो और ऐसा नहीं है मेरे चाहने पे डिपेंड करेगा और मैंने चाह लिया और किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। कई बार ऐसा होता है कि आप खतरे में पड़ते हैं और फिर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स तय करते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट्स तैयार रखेंगे अपने कि आप जो जल्दबाजी पूरे सिस्टम में है, आप उस जल्दबाजी का हिस्सा क्यों नहीं है। तो आपकी अपनी नॉलेज, आपका अपना पर्सपेक्टिव, आपकी अपनी समझदारी, आपका अपना ओरिएंटेशन, मुझे लगता है इस प्रेशर से डील करने में काम आता है। यस, थैंक यू सो मच। मैम, मैं इतना खुद को लकी नहीं समझ रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स 10th क्लास बोर्ड्स के लिए अपीयर होते हैं और मैं हर बार आई हैव टू चूज टू इंश्योर दैट दे आर एबल टू स्कोर। और कई बार हम उन मेथोडोलॉजिकल चीजों में फंसते हैं कि ये करना है और ऐसे ही करना है। पर मैम फिर भी मुझे लगता है कि अगर सिस्टम सारी if it is not even trying to convert every story and every lived experience into a data, it will be very, very helpful and it will make classes a very more livelier space, more spaces of more interaction. But this is also the fact that I really, as a teacher, can't ignore the fact that my students appear for examination, and a lot of times the approach is result oriented. That is right. But altogether, for the curriculum does provide a lot of spaces for dialogues, but learning outcomes, they can't be just pushed back all the time. No. I'll just give a brief reflection on what I heard over the last 1 hour, and also reflecting on myself as an educator, because I'm also in higher education. I sometimes I when I listen to you, both of you, Rajni and Richa, I see a lot of courage. It is not easy to see the world changing every minute, and the reality is changing every minute, and to go into the classroom every day and try and educate
or at least make people aware of those realities without realizing, uh, in fact, not without realizing, but appreciating the fact that you can do only so much, not everything, which basically brings me to this very important conclusion. I think Poonam and me have also discussed a lot about it, that uh, teacher is not the only actor who has the responsibility of changing worldviews, and there's a much larger responsibility, and uh, unless and until we all coordinate our efforts, it's going to be increasingly challenging for us to negotiate the kind of challenges that we see around. But I really enjoyed listening to all of you. But in terms of questions, I like this very important question that has come from Cairo uh, uh, to be addressed first. It's a very important and relevant question. And maybe, Garima, you can read that question, or I can also read. So it says that thank you for this honest discussion. I am joining from Cairo, Egypt. Here, basic education has been commodified and commercialized to the core. Teachers are running private tutoring and mass in cahoots with school principals, all the way up to the minister. Is this a predicament in Indian public schools also? Can organizations like UNICEF, etc., be useful in implementing programs that can tackle caste and class inequities within the Indian public education system? So maybe I'll actually ask Poonam to reflect on this, because uh, she understands all of this. A quick reflection, then we can go to other teachers, to Rajni and Richa. I think both Richa and Rajni can also respond to this, Amir, but Okay. a very quick response. Yes, I think, India's facing very entrenched problems in terms of commodification and commercialization. I think from a country with 80% students in the state schools at the elementary level in 2012 or so, you can say about 10, 12 years ago, to now coming to almost down to 65%. So privatization is the big buzzword, and policy is moving in that direction. I am not sure whether UNICEF is in very much power to do much. The UN is already bankrupt, I think, in many ways. The big power of the world, which is the US, has moved out of UNESCO and everything else. And it seems that even bilateral organizations are not coming to the rescue of education. They haven't come to the rescue of the children of Gaza. So that's a painful thing to accept, but we still don't give up. And I think teachers will give us a little more insight into this. मैम, अगर हम इसको ऐसे समझे कि प्राइवेटाइजेशन किस तरह से दिखाई पड़ता है हमारे स्कूली दुनिया में और एजुकेशन की दुनिया में, तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि यूनिसेफ और यूएन, जैसा आपने बताया कि उनका तो नहीं इतना नजर आता कि कोई हस्तक्षेप इस तरह से स्कूल में, और अगर है भी तो उसकी जानकारी शायद मुझे नहीं है। पर मैं देखती हूँ कि कई ऐसे नॉन पब्लिक एजेंसी हैं जो जिनका दखल है स्कूलों, और वो जिस तरह की रिकमेंडेशन देती हैं, चाहे वो करिकुलम को लेकर है, टीचिंग को लेकर है या स्कूल एनवायरनमेंट को लेकर है, उसमें आप ये महसूस कर पाते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं, क्या हम पब्लिक एजुकेशन की तरफ हैं या फिर हम प्राइवेट एजुकेशन की तरफ हैं। तो इंटरफेरेंस मैं बता सकती हूँ कि हाँ, मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इंटरफेरेंस है। So multiple non-state actors are influencing in their own ways. But Rajni, I'd like to stay with you. There's an interesting question here coming from Nikhil. सरकारी स्कूलों में टीचर्स मोटिवेटेड रहते हैं, किंतु उनको गैर शैक्षिक कार्यों में व्यस्त रखा जाता है.
ऐसे पढ़ना और पढ़ाना प्रभावित होता है। ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है सर, शिक्षकों को अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। टीचर्स कलेक्टिव जो हैं उनके लिए, कि आप अपने मित्रों से मिलें, आप उन दोस्तों से मिलें जो आप ही की तरह शिक्षा और शैक्षिक मुद्दों को लेकर के चिंतित रहते हैं, उन पे काम करना चाहते हैं। और दूसरा मुझे लगता है पढ़ना, खुद बहुत पढ़ना। और तीसरी चीज़ कि आप अपने स्टूडेंट को देखिए कि आप भले ही बहुत सारे गैर शैक्षणिक कामों में दबे हुए हैं, पर आप 15 या 20 मिनट के लिए क्लास में गए और आपने कुछ ऐसी बात या कोई ऐसा विषय बच्चों के साथ डिस्कस किया, तो शायद आप उस चर्चा से आपको बहुत कुछ मिलता है, उम्मीद। कि और कई बार ये ताकत भी मिलती है कि आप जो बहुत सारा पेपर वर्क है जिसके लिए आप अपनी क्लास को, अपने अपने टीचिंग को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसके साथ समझौता कर रहे हैं अपने शिक्षण के साथ में, आप उस आप एक आंतरिक बल शायद आपको मिले कि आप उसको दरकिनार करें थोड़ी देर के लिए कम से कम, और अपने स्कूल में जाएं। तो मुझे तो यही लगता है, मैं तो लोक इस तरह शिक्षा से मंच के बारे में बता दो आधे मिनट में। हाँ, जी, लोक शिक्षक मंच एक छोटा-सा संगठन है, मंच है, और ये मंच इसलिए है कि ये दिल्ली में और दिल्ली से अलग राज्यों में भी अगर टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अ, उनका एक छोटा-सा संगठन जो साथ मिलकर बैठते हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, और जिन मुद्दों को एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि यूनियन के स्तर पर उठाना चाहिए, उन मुद्दों को ये लेकर के आते हैं, और अपनी अ, इंडिपेंडेंट रिसर्च भी ये लोग करते हैं। तो खासतौर से जो स्कूली मुद्दे हैं, उनको लेकर के। और इनका एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये कि सबके लिए समान शिक्षा, एक कॉमन स्कूल सिस्टम की ये बात करते हैं, और उस उद्देश्य को पाने में क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, या क्या कैसे उस तक पहुँचा जा सकता है, उसके लिए रास्ते बनाए जा सकते हैं। ये पूरा उनके लिए एक अच्छा है। Thank you. This is a very important initiative taken by teachers of the state schools and a little bit like-minded, and they try and keep this debates, sort of burning, and wherever possible to sort of intervene into the cracks of the system and try and assert and reclaim the space that teachers have. Not that it's very easy to do that, but at least there are teachers and there are groups of teachers who are doing that. Garima, may I ask you to please look at the other questions also and let. Absolutely. There's an interesting question that's coming from Rama. I'll read it out over here and then we can decide who would answer that. The teacher is the lowest denominator. It's a very powerful statement. Why isn't the leadership more open to participative and democratic processes in dismantling power structures? I'm wondering if Richa would like to answer, because I think Richa mentioned the lowest denominator. Yeah, I think when we initiated this conversation, Professor Batra asked the same, something on the similar lines, and the policy does not have this. It is not geared towards making the teacher an equal participant in policy making. So there is a clear bias, and that is very apparent from how the policies are uh, created and drafted. However, it is also the thing that I mentioned before, that teachers are not found capable, or mistrust is very strong. So probably this is where it is leading from, and we also see that this also impacts the teacher education programs, because you are not desiring teachers who are very confident, who know what education means and what they are expecting and how they would want to act. So not very strong teacher education systems are producing that kind of teachers also. So it is a loop. Yeah. I think this also answers two questions that were asked earlier about teacher education. I'll read them out quickly and then we can decide if we'd like to answer them as well. So Amir in the beginning had asked the question of why. So somebody's thanking him, saying that thanks Amir for bringing the question of why in the picture. Would also like to hear from teachers how sometimes institutions like SERTs or diets do end up crushing this personal motivation
How do teachers navigate this ever-changing tension? There's another question related to teacher enrichment programs. Since Rajni is emphasizing the role of teacher education programs, I would like to know to what extent do teacher enrichment programs orient and prepare prospective teachers to pursue research, especially for reflecting and improving their own practices? मुझे ऐसा लगता है कि जो टीचर एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं वो जितना आपको स्कूल को टीचर्स को समझने में मदद करेंगे, उतना ही आपको फील्ड को समझने में मदद करेंगे। आप जब रिसर्च में निकलते हैं तो आप रिसर्च करने के बारे में जब सोचते हैं तो रिसर्च का आइडिया या ख्याल ऐसे ही नहीं हमारे दिमाग में आ गया कि अच्छा आज उठे हम वो रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरह के प्रोग्राम्स में हैं, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में, और वहाँ आपको कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो फील्ड के साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका दे रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए रिसर्च के जो दायरे हैं वो भी खुलते हैं कि आपको कहाँ रिसर्च करनी है, किस मुद्दे को आपको एक्सप्लोर करना है, किसको किसको डिस्कवर करना है। तो ये उस तरफ आपको एक डायरेक्शन देने में मदद कर सकता है। आई होप कि मैंने उनको यही सवाल था शायद, जितना मैं समझ पाई। जी, थैंक यू। Sir, I believe, yes, that is true. Sir, these institutions were, inception of these were to support and to provide opportunities for further learning for teachers. They have kept their, they have tried to do this, but because of over the time, the bureaucratic hurdles and how things have been shaping up, it is not very encouraging. And like I said, sir, if you do not have healthy institutions for in-service teachers and for preparing teacher educators, you'll always have these teachers who would look forward to the orders. So it is feeding into the thing. So if you want stronger and more teachers with more agency, you'll have to have those teacher education programs which make them believe in their profession. So There's an interesting question that has come in, and this reminds me of the BLEd program, Professor Batra, and a very critical component of the BLEd program. That's all that I'm going to say, and I think Richa and Rajni can add more to it. In teacher training programs, there's little room and emphasis on well-being, empowering teachers with knowledge and skills to ensure students' well-being and safeguarding their own well-being. Why so? वो पूछ रही है कि ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में इनको क्यों रखा जाना चाहिए? नहीं, हाँ, कि नॉर्मली ये होते क्यों नहीं है और ये इम्पोर्टेंट है तो रखा क्यों नहीं जाता है इनको? करेक्ट, आप जो बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ बेहतरीन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को देखेंगे तो वहाँ आप इसकी जगह बहुत पाएंगे, जहाँ टीचर की वेलबींग और स्टूडेंट की वेलबींग, स्टूडेंट कैसे टीचर कैसे या फ्यूचर टीचर किस तरह से एम्पावर हों और नॉलेजेबल हों, स्किल्ड हों, ये है। लेकिन ये बात सच है कि अधिकांश टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जितना मेरा अनुभव रहा है इस दुनिया में रहने का स्कूल में और टीचर से मिलने-जुलने का, इसकी भारी कमी है कि आप बहुत मतलब देखते इतना लिमिटेशन है कि आप मतलब आप टीचर से जब बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी और दुनिया के हैं और शायद हम जिस तरफ से आए हैं वो कोई और दुनिया है। मैं अपने आप को बहुत स्पेशल नहीं बता रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि ओरिएंटेशन में कितना फ़र्क रहता है। एक ही मुद्दा होगा, उस पर हम बात कर रहे होंगे, लेकिन हम सेम लाइन पर आने में बहुत समय लगाएँगे या आएँगे ही नहीं। हाँ, और ये जो ये फ़र्क है, आइडियाज़ का जो फ़र्क है, ये वहीं से आता है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वेलबीइंग वाला मसला है, कई बार ये अभी डिस्कशन में आया भी कि आप प्रेशर से कैसे जूझते हैं, आप कैसे नुआंसेस क्रिएट करते हैं। ये सब बहुत आसान नहीं होता है, मैं ये बता दूँ आपको। लेकिन आप जिस तरह के एजुकेशन से गुज़र कर आए हैं, अगर वहाँ आपके इन सब डर यानी आपके जो फ़ियर्स हैं, आपकी एंग्ज़ायटी है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ज़िंदगी को लेकर के जो आपकी विज़न है, इनको अगर एड्रेस ही नहीं किया गया या इनको मौका ही नहीं मिला बाहर आने का, इन पे डायलॉग करने का, तो आप ज़िंदगी भर इससे जूझते रहेंगे। और मुझे लगता है फिर आप किस तरह की वेलबीइंग या किस तरह के व्यक्तित्व की तरह उभरेंगे, वो इससे तय हो जाता है कि
आपने खुद अपनी ज़िंदगी के उन सभी फ़ियर्स को और उन सभी एंग्ज़ायटीज़ को, उन सभी इनसिक्योरिटीज़ पर बात की है? देखिए, एक सिस्टम में बहुत सारे फ़ोर्स होते हैं जो आपके लिए बड़े डर की तरह काम करते हैं, चुनौतियों की तरह काम करते हैं। लेकिन उन पर बात करना, उनके बारे में सोचना, उनसे जूझने के रास्ते निकालना, इस पर अगर बातचीत नहीं हुई है, तो आप किस तरह के वेल बीइंग की बात कर रहे हैं, ये मुझे तो मतलब मेरी समझ से तो परे है ये। जी। पर हाँ, ये है कि ये नहीं दिखलाई पड़ता, बहुत ज़्यादातर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। यस, जबकि होना चाहिए। पर्सनली मैं ये बात कॉमनली होना चाहिए। हाँ जी। रिचा, इफ यू हाँ, लाइक टू मैं ऐड। बस इसमें इतना ही ऐड करूंगी कि लाइक आई हैव बीन इन दिस सिस्टम फॉर मोर देन 10 years नाउ एंड देयर हैव बीन सम सिस्टमैटिक डिस्कशंस वेयर एट द एंड ऑफ सम डिस्कशंस आई हैव बीन आस्क्ड, आप कहाँ से पढ़ के आई हैं, आपके इतने इस तरह के ख्याल क्यों हैं, why are you thinking so differently? I think they what they mean to ask is ki, why can't you be the part of the group, why can't you agree simply? And this is obviously I'm not taking no credit, probably you become a sore thumb for some discussions, but then this is how I have been trained. She's absolutely right when she's saying it is the matter of how you have been oriented, how you see yourself as a part of a system, and how you see what you have to do inside the classroom. So if you are if you fairly well know that this is what I am supposed to do, you are able to find your motivations and you are able to resist some pressures. So that is how. Exercising agency is also about resisting something. Yes, yes. And she's right that there will be moments where you think you don't have any energy, you are losing it out. That is where your companions, your collectives, and talking to people with similar orientation helps a lot, a lot. Yeah, I think teacher collectives is an important idea that you're talking about, and there's already some examples of it. There's an interesting question by Kriti. She says, I can see, what the impact of the program has had on you. How do you take this forward into a in-service program? I mean, I'm sure there'll be some ideas that you'd like to share. मैम, इसको भी हम 2 तरह से देख सकते हैं। एक कि आप जिस स्कूल में हैं, आप वहाँ कुछ इस तरह की प्रपोज़ल्स रखें। बहुत कुछ स्कूल में होता है टीचर्स के लिए कि आप आज उनके साथ ये वर्कशॉप करेंगे, वो वर्कशॉप करेंगे और रीडिंग को समझेंगे, राइटिंग को समझेंगे, न्यूमरेसी किस तरह से डेवलप हो बच्चों में, इस पर बातचीत करिए। ये एक तो है स्कूल के लेवल पे, एक है सिस्टमिक लेवल पे आप कैसे रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सर्विस प्रोग्राम में उसकी पॉसिबिलिटी मुश्किल से नज़र आती है, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते नहीं हैं। जब भी हमारे फीडबैक जहाँ माँगे जाते हैं, हालाँकि उनका क्या होता है, इसको लेकर के मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूँ, ना मैं बहुत होपफुल हूँ इनको लेकर के। पर मैं कोशिश करती हूँ कि हर जगह जब फीडबैक माँगे जा रहे हैं, तो वहाँ अम, रिगरस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पे ज़रूर सवाल करूँ या उसकी इम्पोर्टेंस पे बहुत सवाल करूँ और कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल से। मान लीजिए अगर यही बात हो रही है कि बहुत स्ट्रेस है स्कूलों में, चलिए आपको सबको हम एक शिविर में भेजते हैं, वहाँ आपका स्ट्रेस कम होएगा। तो अब उस पे आपसे फीडबैक माँगा जाता है कि अच्छा ये कैसा रहा ये प्रोग्राम? तो उस तरह वहाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ ये कहना कि आपने क्या टीचर से ये बात की कि आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या समस्या है जिसकी वज़ह से आप स्ट्रेस में हैं? हाँ, तो और उसको दूर करने की क्या सिर्फ़ यही एक तरीका था या कोई और भी तरीके हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ डेवलपमेंट वर्कशॉप्स हैं क्या? या फिर कुछ ऐसी थिएटर्स हैं क्या? या फिर कोई रीडिंग वर्कशॉप हो सकती थी क्या? मतलब उन सब के एग्ज़ाम्पल दें, उस फीडबैक में। और रही जो स्कूल की स्तर पे बात, तो मुझे लगता है जहाँ मौका मिलता है आपको इनिशिएट करने का, आप स्कूल में वो कर पाते कि जैसे कि आप टीचर्स के लिए कोई आपने एक थिएटर एक नाटक तैयार कर लिया और आज नाटक के माध्यम से देखेंगे क्लासरूम में क्या चलता है। तो वो ऐसे मुद्दे जिनसे आप जूझ रहे होते हैं, बहुत सारे टीचर्स जूझ रहे होते हैं और वो नाटक को देख करके वो समझते हैं।
तो ये सब जो हमें बीएलएड ने सिखाया, मतलब मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि जो बीएलएड में मैंने थिएटर को लेकर के सीखा या लिटरेचर को लेकर सीखा, स्टोरीज को लेकर के सीखा, वो सब स्कूल में हम इस तरह से ला सकते हैं अपने लेवल पे कि स्टोरी कॉर्नर्स बनाएं, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो, लिटरेचर हो, जिनको हम स्कूल में लेकर जाएं। टीचर्स को पढ़ने के लिए कम से कम हम बता सकते हैं, बाकी कितना उसमें वो इनिशिएटिव लेते हैं वो एक अलग मुद्दा है, पर कम से कम ये शुरू किया जा सकता है। तो मैं तो इसको ऐसे ही देख रही हूँ। थैंक यू। एक लाहौर से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या हम डू यू थिंक द स्टेट शुड itself be running the schools to ensure higher quality, even at a higher cost involved? Given that by outsourcing schools to the private sector through PPP model, the state can reach out to more students. I'd just like to say that no, I mean, the state is a problem because the state tends to impose its ideology. The state tends to impose the kind of policy in India we are facing at the moment is where they are actually pushing privatization. So the state is very happy taking a back seat and not really, enabling quality education, or rather equitable quality education. So the state has been a bit of a issue, and I think the teachers have already sort of shared that with us. Any other questions, Garima, you think we have missed? Yes, there's something that I wanted Rajni to repeat again, and we've got a question about that. The collective that Rajni, जो आपने वो मंच के बारे में बात करी थी, अगर आप उसका नाम दोबारा एक बारी बता सके, and if teachers in the audience, if they can join that collective as well, वो कैसे कर सकती हैं? हाँ, इसका नाम है लोक शिक्षक मंच। दिल्ली में एक लोक छोटा-सा संगठन है जिसमें दिल्ली सरकार के भी टीचर्स हैं, एमसीडी के भी हैं, कुछ केवीज़ में, कुछ टीचर एजुकेटर्स भी हैं इसमें जुड़े हुए, और ज़्यादातर लेकिन स्कूल टीचर्स जो अपने स्कूल के मुद्दों को लेकर आते हैं, आपस में बात करते हैं, उन पर क्या लिखा जाना चाहिए, क्या पढ़ा जाना चाहिए, क्या मटेरियल हमें पब्लिश करना है, किस तरह की रिसर्च हम कर सकते हैं, ताकि एक ऑर्गेनाइज एक रीडिंग हम क्रिएट कर सकें टीचर्स के लिए। So the question is, how do you get हाँ, to, supposing some join कैसे? हाँ, जो उसके लिए आप अगर गूगल सर्च करेंगे लोक शिक्षक मंच, तो आप उनके ब्लॉग पर जा सकते हैं, वहां पर उनका ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, try and put that right now पर मिले. I think we've also reached the end of our session today. So, and there are still a couple of questions जो हमने अभी तक respond नहीं करा है उनको, but I think that's the nature of the webinar, and we'll make a note of these questions, and the webinars through the Reimagining Education for Equity program, we'll keep coming back with more webinars, so we'll try and address these questions there. But there's a comment by someone that I think it's gone over here, but I think it was from Kritika Manjrekar. I'm not sure if I might have not spoken the name correctly. Anjali Manjrekar. Yes, and she's thanked everyone for this very insightful conversation that I absolutely agree with. And she's also said that thank you for keeping the hope afloat, which I 100% agree with. I think it's because of teachers like you all over here that we are still able to find meaningful education, taking place in our schools and higher education spaces. So with that, I would thank everyone who's been part. Just yes, want to of add course, Amir, sorry. that I was listening to this question from Kriti and about in-service teachers and how do we kind of keep learning. So our MOOC is one small effort in that direction. I think we have synthesized what we could at one place, and the idea was exactly the same, like that of Lok Shikshak Manch, that some of us, 100, 200, will join, become a group, debate, discuss, and we have a background anchor in the form of MOOC, giving you all the resources that are required, at least to begin with. So I'll request people to consider doing that MOOC, and we'll keep churning out
interesting programs like that. And may I just thank Richa and Rajni very much for sharing your views as teachers. And I think you have given teachers a new hope that, yes, there are possibilities and we have to find and sort of forge those as we move along. But there are tough times. And I think those tough times we haven't discussed enough, but maybe another occasion. But I would like to also say one more thing, which is you kept calling us ma'am and sir. I'm waiting for the day when we don't need to do that. And we are all colleagues because we are all teachers and learners. And of course, a more egalitarian society is what one is looking towards. And hopefully, education becomes a space to be able to effect that. But thanks very much. And thank you, Garima, for putting in all this effort. Thanks a lot, Amir. Thank you. Absolutely. बहुत शुक्रिया आप सभी का. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you so you. much. It was Thank you, wonderful to be Rajni part and of this Richa. discussion. Thank you. Absolutely. It was beautiful hearing you all. Thank you, everyone who's joined us, and we wish you Yes. a lovely evening ahead. Thanks to all who joined.